Good afternoon, kids. We have been doing our lesson number 10. Open your books on page number 143, everybody. Page number 143, lesson number 10. So the topic was money from the different countries. We have done the part also, but still some portion is left out. So we'll do it again because there is a lot of use, gap was there in our classes. So we'll revise it. And not only revise, we will do the same concept from page number 143. We will do it again. Okay. So please open your books on page. Okay. So yes, the same concept we are taking it again. The money from the different countries. This topic is a little bit, difficult as well as it's very important also. Yes, now it's good. To start this topic, this thing is very clear that Indian currency, which is rupees, has a different value in different countries. Such as in the table we can see here on this page, that Korean won will be cost rupees 0.04. Okay, Sri Lankan rupee will be equal to Indian 0.37 rupees. That means about 37 paise. Nepal rupees is equal to Indian 0.63. That is equal to 0.63 paise. In the same way, Hong Kong dollar, one Hong Kong dollar will cost you about 5.10, means 5 rupees and 10 paise in India. Okay, so this shows the difference of that amount from the different countries. So just South Africa, when we are talking about rand is the currency, and it will be 5.80, means 1 rand will be equal to 5.18 rupees in India. Such as again, if you move ahead, China is yuan, that is about 5.50, means 1 yuan will be cost about 5.50 rupees. The page number is 143 that I have already mentioned to you. If you still want to write it down, you can just write down page number 143. Okay. So now we'll see the questions. Question number 1 says, the money of which country will cost you the most in Indian rupees? Here we have a table. Okay, and out of that table only we have to find out the country name which is having the highest amount. And as per the list, the country is England. Very good. So the first question, the answer will be England. That is given in the last. The currency is pound, and that is 77.76, means 77 rupees and 76 paise for 1 yuan, for 1 pound. Sorry. Now, Mithun's uncle is in America, had sent him 10 US dollars as a gift. Mithun used 350 rupees for a school trip. How much money was left with him? This question is the most important question. It used to come in every year. Essay 2 पेपर हर साल ये क्वेश्चन आता है. Maybe that they can change the name, they can change the amount, they can change the person, but the question will be same. Every year this question used to come. Okay, so we have to a little bit more focused on this one. So now let's start with this. I'm starting with question number B. Mithun 1. You can write down the question from the book itself. I'm simply writing down the solution. The question says, Mithun's uncle in America had sent him 10 US dollars. How much money? Now, if we want to convert these 10 US dollars into Indian rupees, how much it will be? In Indian rupees, we can say will be 10 multiplied by the cost of 1 US dollar, and that is equal to 39.70. Okay, that is 39.70. So we can write down
39.70, and if you multiply these two, the answer will be 397 rupees. So the 10 USA dollars will be equal to 397 Indian rupees. So now we have to find out how much money he has spent. You know the difference. Okay, so the already he has used 350 used is equal to 350 rupees. Now left amount will be left amount will be 397 minus 350 is equal to 47. Okay, the left amount is how much rupees? It is 47 rupees. Now once again we will see how we got the answer. Mithun Nangal sent in 10 USA dollars that we have already mentioned on the top, 10 USA dollars. So how much was that? Or you can say how much we have to give for these $10. That amount will be 10 multiplied by 39.70. Why 39.70? Because $1 is equal to 39.70 rupees that we have not mentioned here. You have to make one more line here. $1 is equal to 39.70 rupees. So this line we have to add here. Then we have multiplied this 39.70 by 10 and finally we got the answer as 300. So that 397 he has used 350 rupees. So the left amount we have to subtract this 350 from the total amount that was 397 and the left out amount will be 47 rupees. I hope this is very clear to you all. Any problem to anybody in this? Okay? Any problem to anybody, beta, in this question till now? Okay. Now look at the next question. Majid's father working in Saudi Arabia, he got 1,000 Saudi Riyal as salary. Arun's father working in Sri Lanka, he got 2,000 Sri Lankan rupees. Who got more Indian rupees as salary? So first of all, we have to convert the amount in Indian rupees. Then only we can find out the total amount in Indian rupees. In all, we can say we can find out the total salary. So I'm going to clean the board now. Yes. First of all, we have to see one सबसे पहले हम देखते हैं माजिद का हम निकालेंगे माजिद father. Okay, how much he is earning? He is earning 1,000 Saudi riyals. We can say 1 riyal is equal to, how much is the given in the amount? We have to see that 1 riyal is equal to Saudi Arabian UAE. इसने क्या किया है यहाँ पे? इसमें देखिए जो दिरहम है, यूएई वाला जो रियाल है, इसमें रियाल का इसने अलग से नहीं दिया है. इसमें आप एक काम कीजिए, इसको दिरहम कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि रियाल का इसने दिया नहीं है बुक में, फिर कंफ्यूजन रहेगा. You just change in the book.
इसमें रियाल है बुक के अंदर प्रिंट में बच्चों, इसको रियाल की जगह आप दिरहम कर लीजिए, आप इसको ना दिरहम। तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर रहा हूँ बुक के अंदर, जैसे आप चेंज करेंगे आई एम चेंजिंग हियर आल्सो, रियाल की जगह पर आई एम जस्ट राइटिंग द वर्ड दिरहम। वन दिरहम, वन दिरहम की अगर कॉस्ट देखें तो द कॉस्ट इज अबाउट 10.80, 10.80 rupees. Okay, so find out the cost of total. So in 1000 dirham is equal to 1000 multiplied by 10.80, and you know what will be the answer? The answer will be 10,800 rupees. Okay, the answer will be 10,800 rupees. Yani ki Baziz's father, who is working in Saudi Arabia, he is getting 1,000 dirham as salary, but when he came back to India, the amount will be 10,800 rupees. But in some of the books it is written as real. We have to see. We got for the Mazid father. Now, second person is Arun. So we are just stopping it right now, and we'll try to find out for Arun's father how much he is getting. He is getting 2,000 Sri Lankan rupees. 2,000 2,000 Sri Lankan rupees. 1 Sri Lankan rupee. One Sri Lankan rupee is equal to how many in Indian one? That is 0.37. 0.37 Indian rupees. Okay, so we can say, so in 2,000 Sri Lankan rupees, now we don't have the space here, so I am using this part of the board. Up to this much I can use. Okay, so it will be 2,000 multiplied by 0.37. Okay, and the answer will be 7 2s of 14s of 4, 1 carry over, 3 2s of 6 plus 1 7, and 740 rupees. So we can see one person is getting just 700, is getting more. Here two things are there, kids. If we is simply writing who is getting more salary, then we can write down directly answer. Who get more in Indian, how much more than we also. So finally the answer is Majid's father is getting more in Indian rupees. Okay? Yeah. You can just note it down. Majid's father is getting more in Indian rupees. Next we have
Okay. Yes. Next we have question number D. Lina's auntie brought a present for her from China. She cost 30 yuan. Find what was the cost in Indian rupees. I have to clean it. If you want to copy it down, you can. But after this video also, you can just play it. At that time you can copy. I have to clean the board. We have to do a lot of work today. Once again, while you play the video with the using the link, that time you can copy. Now the next question is about, just a minute. Hello. बोलो. Class में मैं तो बात करता हूँ. हाँ. 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 ओके, बाय. क्लास अभी क्लास चल रही है. बाय. ओके. लीना की आंटी ने, यू कैन सी, बेटा ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले भी, बट इट इज सिंपली वी आर डूइंग द रिवीजन. बहुत दिन हो गए ना, सारा भूल चुके हो अभी तक. तो चाइनीज युआन, 1 युआन is equal to how many rupees here? We have 5.50 rupees. 5.50 rupees. Okay, so in 30 yuan is equal to 30 multiplied by 5.50. To find out the final answer, we have to multiply these two. So we have two zeros, one is here, one is here, so study has directly written two zeros here. 5 3s are 15s of 5, 1 will be carry over. 5 3s are 15. Once again we will check the calculation. Two zeros are there, so we have placed these two zeros here, over, and 5 greater 1 carry over. 5 3s are 15 plus 1 16. And as we can see, there is a decimal before last two digits. So we have to also make the decimal here, and the answer will be rupees 165. So the total cost of that gift is rupees 165 in India. Okay. Now, question number E. Ashka wants some Hong Kong dollars and won. How many won she can change for rupees 4 and for rupees 400? There are two questions, 4 rupees 4 and 4 rupees 400. Hong Kong dollars. Okay. Korea. Okay. You know the Korean won cost rupees 0.04. और 0.04 का अगर कोई कोरियन वॉन है तो 4 रुपीज में हम उसको कितना ले सकते हैं. वी हैव टू डिवाइड. टोटल हमारे पास अमाउंट है 4 रुपीज और 1 वॉन की कॉस्ट है 0.0 rupees. So how many wons will be there? To find out the answer, we have to divide the total amount with the cost of 1 won. So let's try to find out the solution for that. How many won? I think that word is won only. Yes.
करेंसी है कैपिटल में आएगा इन 4 rupees. Okay, 1 won is equal to 0.04 rupees. So total will be total amount divided by 1 won in Indian rupees. Okay, so it will be 4 rupees. Okay, total rupees are 4, so we have written here 4, and the 1 won is equal to 0.04. That means we have to divide this 4 by 0.04. Now to divide this number, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि साफ साफ आपको नजर आ जाए. 4 divided by 0.04. ओके, यहां पर से अब इसको डिवाइड करने के लिए बच्चों सिर्फ हमें एक ही चीज की जरूरत है, एंड दैट इज कि हम यहां से किसी तरह से नीचे के डेसिमल को हटा दें. और ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको क्लियर किया था जब हमारा इस डेसिमल वाले टॉपिक को लेकर पहली क्लास जो हमने रखी थी, तो मैंने आपको तरीका बताया था हाउ यू हैव टू डिवाइड. सबसे पहले हमें इस डिवाइड को हटाने के लिए किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 2 जीरो हो, तभी जाके ये हटेगा. दैट इज 100. यानी कि 100 से हमें इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी. जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखो आंसर क्या है, ऊपर तो आ गया बच्चों 400 और नीचे हमारे पास आया डिवाइडेड बाय 4. अब आप पूछेंगे सर ये आया कैसे, बोला 400 डिवाइडेड बाय 4. आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल अपने आप 2 जीरो यहां पर है, 2 डेसिमल नंबर पीछे चला जाएगा, एंड द आंसर विल बी आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस ऑल यू विल बी गेटिंग अ 4 ओनली. Okay, and 4 multiplied by 100 will be 100. So 4 ones are 4 and 4 ones are 4. They will be cancelled. So we can say 100 divided by 1 is equal to 100. तो 4 rupees में जब वो 4 rupees लेके जाएगा वॉन लेने के लिए, so how much he will be getting? He will be getting just 100 wons only in 4 rupees. इसको वापस समझ लीजिए, ये थोड़ा सा टॉपिक हटके है. यहाँ पर अभी तक वो पूछ रहा था कि कितने रुपए, अब वो पूछ रहा है कितने वॉन हुए. ओके, अब वो पूछ रहा है कितने हुए वॉन, तो उसका यहाँ पर बहुत क्लियर है बच्चों कि 1 वॉन की जो कॉस्ट है दैट इज 0.04 रुपीस और टोटल हमारे पास है ₹4. तो हमने यहाँ पे निकाला फार्मूला कि तो अगर नंबर ऑफ वॉन्स हम निकालना चाहते हैं देन द आंसर विल बी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 won in Indian rupees. So the total amount is 4 rupees. So we have written 4 on the top. 1 won was 0.04. So we have written it here. You can see there written 1 won is equal to 0.04. So we have placed the same here only. Now to divide these two numbers, we have to remove the decimal. To remove this decimal, we have to multiply it by 100. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके बच्चों ये डेसिमल हटेगा. तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी होगा. ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो 4 into 100 400. ओके, और नीचे मल्टीप्लाई किया इसको तो आंसर हमारा सिर्फ आया 4. आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. When we got up to here, we got 400 divided by 4. 4 ones are 4, 4 ones are 4. दोनों 4 कैंसिल हो गए, ऊपर और नीचे रह गया 1 और 1. So finally on the top we left with 100 and bottom with 1. So the answer is 100 wons. 100. Okay. इसी सेम वे में अगर जैसे मान लीजिए ये तो हो गया अगर वो 4 रुपीस होते उसके पास, तो अब ये कह रहा है कि अगर उसके पास होते, नेक्स्ट पार्ट में देखो इसी में, अगर इसके पास होते 400 तो क्या होता. अरे भाई 4 है तो 100 है, और अगर 400 होते तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सीधा.
अगर इसके पास 4 रुपीज है तो आए, अच्छा 4 में कितना मल्टीप्लाई होगा, 100 मल्टीप्लाई होगा तभी तो 400 हुए ना। ऐसे इसका जो आंसर है उसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली वी कैन केम टू नो दैट द आंसर विल बी 10,000। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको भी अभी अपन फटाफट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। यहां के बाद का हमें चेंज करना है सिर्फ इतना था। अगर हम कहते हैं कि उसके पास 400 रुपीज है, चलिए ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया इसका। अब रुपीज कितने हो गए, 400। अब देखते हैं हमने क्या किया इसमें, यहां पर चेंज कर दिया, इसको कर दिया हमने 400, ठीक है। यहां पर अब 400 हो गया क्योंकि उसके पास 400, एक की कॉस्ट तो वही है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो तो यहां पर ऑलरेडी है, 2 जीरो ये हो गए, यहां हो गए 0 4 1 और 2 जीरोस ऐड हो गए। ओके, 2 जीरोस हमने यहां पे बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि ऑलरेडी पहले 4 था, इसको 400 किया तो 2 जीरो बढ़ी, डेफिनेटली आंसर में भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहां पर, और यहां पर भी 2 जीरो बढ़ जाएगी, और यहां पर भी 2 जीरो हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर उसके पास 400 रुपीज होते तो उसे 10,000 बॉन्ड्स मिलते। आप देख लीजिए बाकी सॉल्यूशन में कहीं पर कोई भी चेंज नहीं है, बाकी सॉल्यूशन में बच्चों कहीं पर कोई भी चेंज नहीं है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 मिनट और लगेगा। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी। हाउ मेनी बॉन्ड विल बी देयर, 400। अब यहां पर हो गया हमारा 400 रुपीस, 1 बॉन्ड की कॉस्ट फिक्स है, दैट इज 0.04। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 बॉन्ड इन रुपीस। हमारे पास अब टोटल अमाउंट हो गया 400, हमने लिखा 400 डिवाइडेड बाय 0.04 जो कि एक बॉन्ड की कॉस्ट है। इस डेसिमल को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि दो डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हमें 2 जीरो चाहिए थे जो 100 में होते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया नीचे 100 से तो ऊपर भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो यहां पर थे हमारे पास, 2 जीरो ये रहे, तो 4 जीरो 1 2 3 4 और 4 होता 4 और नीचे रह गया हमारा सिर्फ 4। अब देखिए यहां से दोनों 4 होता 4 से दोनों 4 कैंसिल हो गए और ऊपर भी रह गया 1, नीचे भी रह गया 1, तो यहां पर तो रह गया 10,000, नीचे रह गया 1 और फाइनली 1 का कोई मतलब है नहीं तो इट विल बी 10,000 बॉन्ड्स ओनली। इसके तरीके तो बेटा बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, आप एक ही पैटर्न को लेके चलो जिससे आप इजी में निकाल सके। बस तरीकों में पढ़ोगे तो बेटा मैथ्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, उसको भी समझ लीजिए एक बार। सेकंड पार्ट कहता है हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन यू चेंज फॉर रुपीस 508। हांगकांग डॉलर्स, हांगकांग डॉलर्स, हांगकांग डॉलर्स आ गया, हांगकांग डॉलर्स। हाँ, इसका जो इसमें जो देखो एक चीज का ध्यान रखना सारे बच्चे, इस क्वेश्चन में जहां पर लिखा हुआ है ना 508, इसको आप लोग सारे बच्चे बेटा 510 कर लो बुक के अंदर। बुक के अंदर यहां पर 508 लिखा है ना उसने, वहां पर आप लोग क्वेश्चन में 510 कर लीजिए उसको। ओके, जहां पर बुक में 510 लिखा है, 508 लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ 508, जस्ट चेंज इट विद 510। यस, स्टार्ट में
यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है 508, जस्ट मेक इट एज 510। ये चेंज आपको करना है सबको, ओके। नाउ 1 हांगकांग डॉलर की जो कॉस्ट है यहाँ पर वो है 5.10, ओके, रुपीज। नंबर ऑफ इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, सेम पूरा तरीका वही है इसका, डिवाइडेड बाय 1 हांगकांग डॉलर इन इंडियन रुपीस, ओके। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है बच्चों? 510। वी कैन राइट डाउन इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाय 5.10, ठीक है। अब वहां पर भी सेम वही कंडीशन आ गई कि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यानी कि हमें इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें 2 जीरो है, दैट इज 100। 100 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो टोटल जीरो कितनी होगी बच्चों? 1। नीचे हमारे पास आया, जब हमने इसको यहां से 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल चला गया 2 नंबर पीछे, यानी कि 510। अब देखिए हम यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा का पूरा 510 से कट जाएगा, पूरा का पूरा एक साथ, and it will be 1 and 1, so it will be it's 100 divided by 1 equal to 100 Hong Kong dollars. Okay, so this is all for today's class. आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको, जिनको करना है। ये हमारा जो मनी वाला जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये पूरा हमने करा दिया है। अब इसके बाद इस लेसन में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचे, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। राइट नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग द क्लास। थैंक यू so much for today's class, kids.